Okay, students. So today we are going to take the snap interview of our student Rutvik, and he is going to appear for operating system snap interview. And Rutvik, please introduce yourself. You can use Hindi and My English name both. is Rutvik Jetwa. Okay, sir. So my name is Rutvik Jetwa. I have completed my graduation in computer engineering from Hmm. Vishwakarma Government Engineering College, and I have secured 8.95 CGPA in my computer engineering without any backlog. Hmm. I have qualified GATE 2 times consecutively with self preparation. Hmm. And during my B.Tech project, I have a project in online mentoring system which is based on Python. Hmm. What do you know about Python? Uh, Little bit, I know that the Python is widely used in machine learning and AI, which Hmm. is also and it is also used in data science. And Okay. right now the What stage what is of the the difference Python. between machine learning and data science? So machine learning is a one module of the data science. Data science is a wide. There is lots of module like big data, artificial intelligence, machine learning, and other all are the modules. And one of the module of the data science is machine learning. In machine learning, we are create a program and we provide lots of data to machine Hmm. so that the machine will learn from Okay. the given data. ठीक है, ठीक है. Okay, Rutvik. Hmm. So let's start with operating system interview now. Okay, sir. And I will start with some basic questions and then we will go to some complex problems. Okay. Okay, sir. Okay. Tell me the history of operating systems. So the main reason of the OS to develop the OS is that in earlier phase there is no any interface between a user to communicate with a hardware, and there is no other any module to execute the user program. And the main reason to develop OS is to execute the user program, and because of that the OS is created. And after of that the OS is we are introduced lots of modules in OS like file manipulation Hmm. and inter-process communication, security, Hmm. accounting information. These all are introduced after of that, but the main idea to develop OS is program execution, so Hmm. that the all the programs of the user can be executed. ठीक है. ठीक है. But you have not mentioned the chronological order of types of operating system. Like, what were the earlier operating systems? What do we use now in terms uh, of that? which I don't know, sir. Okay, which was the first operating system? I don't know about that. Okay, fine, fine. ठीक है. Let's continue. Tell me the difference between multitasking operating system, multi-processing operating system, and multi-programming operating system. Um, First of all, I want to say that the multitasking operating system is based on the round robin manner in Hmm. which the multiple processes are executed, and it will be executed for some time quantum, some amount of time. Hmm. And the reason to create a multitasking operating system is that to provide a more interactiveness in our system. And Hmm. modern days are the Windows and all are based on the multitasking operating system. In Hmm. multiprocessing operating system, there is a multiple processor in our system, and all are executed a multiple process at the same time through multiple processor, and Hmm. they are communicating with each other by multiprocessing OS. And in a multi-programming operating system is come because in a uniprogramming operating system only one process is there in a RAM, main memory, uh, Hmm. other than a OS part. So to increase the degree of multi-programming, the multi-programming operating system is come so Hmm. that in a RAM other than OS multiple processes are accommodated, so that if one process is going for the IO Hmm. operation, Hmm. then CPU, we can provide other OS to CPU so Hmm. that the CPU utilization is increases. ठीक है. That's Good all. explanation. Okay. But somehow you mentioned about like
processes can communicate with each other. To justify that statement, like I want to ask you, can two processes communicate with each other? And Yes. if they can communicate with each other, then at what level? And what are the differences between threads and processes in such manner? So processes are communicate with each other by Hmm. shared medium. Like shared medium is anything like resources. They are using a same resources, or we can say same shared memory, Hmm. memory space. Through shared memory, they can also communicate with each other. Like they have a same page number or anything. Through that, Hmm. they are communicate with each other. Uh, and the Okay, second chalo, question was, forget it. sir, Tell me what things. I mean, what things are shared between threads and what are shared between processes. what shared between thread, the modules which are shared between thread are code section, data section, Hmm. uh, then we can say signals. Heap Hmm. region is also shared between thread, Hmm. um, um, alarms, then Okay, accounting informations are also shared between thread. These are, and ठीक है. some of all are shared between. प्रोसेस में क्या शेयर होता है? Process में logical address are shared Hmm. between processes. Hmm. No, any other thing are not shared between the processes. That's why the process are heavyweight compared to thread. ओके, चलो एक केस स्टडी देखते हैं. लेट्स से क्रोम ब्राउजर है और एक फायरफॉक्स ब्राउजर है, ठीक है. क्रोम यूज करता है प्रोसेसेस और फायरफॉक्स यूज करता है थ्रेड्स, Hmm. ठीक है. अब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो कौन सा ब्राउजर सही रहेगा हमारे लिए, क्रोम या फिर फायरफॉक्स? Firefox. फायरफॉक्स क्योंकि सिक्योरिटी के लिए सही रहेगा? यस, हाँ, क्योंकि जो मल्टी थ्रेडिंग है वो विंडोज में यूज होता है. नहीं, अगर Thread, जैसे फायरफॉक्स में हमने मल्टीपल टैब्स ओपन कर रखे हैं विच इज इक्वल टू मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है, और क्रोम में हमने मल्टीपल टैब्स ओपन कर रखे हैं विच इज इक्वल टू मल्टीपल प्रोसेसेस, तो sorry sir, sorry sir, Chrome is more secure than the Firefox, हम्म because Firefox is using a thread, and thread are not secure compared to multi-processing system, बिकॉज because दे the शेयर डेटा एंड हीप thread, एज यू yes, जस्ट मेंशन्ड, राइट? हाँ, हाँ. ओके, ठीक है. ओके, बेलेडेज एनोमली क्या होता है? It is an undesirable situation, and it is comes in a page replacement algorithm called first come first serve, in which whenever the frame numbers are increases, the page fault rate is also increases, and that's why it is undesirable. But in other replacement algorithm, if we increase the frame number, then the page faults are decreases. But in ओके. FCFS, it is sometimes occur, not always, but for some sequence of pages, it will be occur. Page references, it will occur. ओके, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम नोट डाउन करो, ठीक है? Yes. 2 मिनट. टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वॉय इफेक्ट. उसके बाद में तुम्हें एग्जांपल देता हूँ. पहले टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वॉय इफेक्ट. So it occur in a process scheduling in a FCFS algorithm, and whenever a large process, a large burst time process is arrived first, other than a smaller burst time process, then the smaller burst time process have to wait for a load time till the execution of the larger burst time process, and the smaller burst time process will go for the starvation for the longer waiting time, and this is a convoy effect. ओके, ठीक है. नोट डाउन वन पेज रेफरेंस. ओके, 1303563. 563 1303 563. हाँ, और 3 फ्रेम्स हैं. Okay. तो व्हाट आर द टोटल पेज फॉल्ट? Okay. And which algorithm we need to use? फीफो. Before. Okay.
six page faults are there. ओके, हिट कहाँ पे हुआ है? वो हिट जहाँ पे हुआ है For the मुझे fourth सीक्वेंस बताओ. fourth three जो सेकंड थ्री है उसके ऊपर हिट हुआ है. गुड गुड, ठीक है ठीक है. चलो ऋत्विक, दैट वाज ऑल फॉर योर स्नैप इंटरव्यू. लेट मी प्रोवाइड यू द फीडबैक नाउ. ठीक है. ओके सर. ऋत्विक, मैंने तुमसे टोटल 10 क्वेश्चंस आई आज. तो पहला क्वेश्चन था कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन वगैरह. तो उसके लिए तो फीडबैक ये कि तुम्हें कभी ये नहीं मेंशन करना कि तुमने बिना बैकलॉग के पास कर लिया है बीटेक. अगर वो तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो ऑफ कोर्स मतलब तुमने पढ़ाई की होगी, राइट? तो ये सब तुम्हें मेंशन नहीं करना है. फिर मशीन लर्निंग, और अगर तुम ऐसी टर्मिनोलॉजीज अगर इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मैंने तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि मतलब मैं आई मीन मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में डिफरेंस से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था मैंने तुम्हें कि आई डोंट रिमेम्बर क्या पूछा था, बट तुम्हें ये पूछा था क्या डिफरेंस है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में क्या. हाँ, वो डिफरेंस बाद में पूछा था, बट उससे पहले कुछ पूछा था मैंने तुम्हें. तो उसके बाद ये बात आई थी कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है. तुमने बोला था कि ये मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में यूज होता है पर्टिकुलरली. यस, हाँ, मैंने पाइथन के बारे में बोला. हाँ, राइट. तो तुम्हें अगर नई टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पाइथन की बात चल रही थी, तुमने मशीन लर्निंग डेटा साइंस घुसाया, तो यू हैव टू बी ऑन सेफ साइड, राइट? इंटरव्यू में तुम्हें सेफ साइड में रहना है. तो अगर तुम इंट्रोड्यूस करते हो तो तुम्हें पता भी होना चाहिए. समहाउ तुमने आंसर दे दिया था इसका, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आगे से ध्यान रखना अगर कोई इंट्रोड्यूस करते हो नई टर्म. हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पूछा जाता है तो तुम बोलना है स्पूल ऑपरेटिंग सिस्टम पहले था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद आया, फिर अलग अलग टाइप्स की ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ही मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए. ओके, ठीक. फिर मैंने तुम्हें डिफरेंसेस पूछे मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग में. तो तुम्हें ये नोट डाउन करके रखना एक जगह पे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर जगह के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कहीं जा रहे हो तो ये क्वेश्चन तुम्हें पहले मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, ये नोट डाउन करें. फिर बैलेडेज एनोमली तुमने आंसर दे दिया था, विच इज कॉमन क्वेश्चन. कॉन्वो इफेक्ट भी तुमने दे दिया था. फिर ये डेटा शेयर्ड बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेस वाला जो था वो भी तुमने सही से दे दिया था. क्रोम और फायरफॉक्स में मैंने थोड़े हिंट्स दिए, इसलिए यू वर एबल टू आंसर इट. ठीक है, तो बट ये वहां पे हिंट्स नहीं मिलेंगे और एप्लीकेटिव होंगे क्वेश्चंस. तो ठीक है. फिर फीफो पेज रिप्लेसमेंट का भी सही था तुम्हारा आंसर. ठीक है, तुम्हारा मतलब ओवरऑल फीडबैक तो सही है. अच्छा है, प्रिपेयर करते रहो. ठीक है, ठीक है सर. ठीक है ऋत्विक. ओके, ठीक है ऋत्विक, चलो दैट वाज ऑल फॉर द इंटरव्यू. ऑल द बेस्ट. बाय. ओके सर, थैंक यू सर. बाय.